Good morning, dear students. Welcome back to the channel The Easy Science Journey. Today we will do the exercise of chapter 1, that is crop production and management. So let's start with the exercise. The question number 1, select the correct word from the following list and fill in the blanks. आपके पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स है जिसको आपने ब्लैंक्स में फिल करना है. क्लियर. सो द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज नोन एज क्रॉप. आपने अगर पूरा चैप्टर अच्छे से स्टडी करा हुआ है, क्लासेस में पूरा नोट डाउन करा हुआ है, तो यू विल ईजिली डू दिस एक्सरसाइज. ठीक है. सेकंड आता है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज preparation of soil. Damaged seeds would float on the top of water. For growing a crop, sufficient sunlight and water and nutrients from the soil are essential. Clear? Then coming to question number 2, match items in column A and those in column B. So खरीफ की क्रॉप्स आ जाएंगी हमारे पास पैडी एंड मेज. रबी क्रॉप्स आर wheat, gram and pea. Chemical fertilizers you all know, urea and superphosphate. Organic manure, animal excreta, cow dung, urine and plant waste. Then coming to question number 3rd, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. खरीफ और रबी की क्रॉप्स का आपको दो एग्जाम्पल देने हैं, बट आप बच्चों को सारे ही लर्न करने हैं ताकि पेपर में अगर कुछ भूल भी जाए तो कम से कम 2 तो आपको याद रहें. ठीक है. खरीफ क्रॉप्स में आएगा मेज, पैडी, ग्राउंडनट, कॉटन, सोयाबीन. रबी क्रॉप्स में व्हीट, मस्टर्ड, पी, लाइनसीड, ग्राम. क्लियर. Coming to 4th question, that is write a paragraph in your own words on each of the following. जब आपको पैराग्राफ क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप बीच में लाइनें नहीं छोड़ोगे खाली, या किसी लाइन को छोड़ के अगली लाइन से कंटिन्यू नहीं करोगे. प्रॉपर एक पैराग्राफ की फॉर्म में आपको आपका आंसर लिखना है. सो फर्स्ट इज़ प्रेपरेशन ऑफ सॉइल. Preparation of soil means to turn it and loosen it. It is the first and most important step of crop production. The process used for loosening and turning of soil is called plowing or tilling. Loosening of soil add humus and nutrient that increase crop yield. It is done with the help of plow, hoe or tractor-driven cultivator. Soil is loosened to increase absorption of water and manure. Clear? Then coming to the next, that is sowing. It is an important agricultural practice in which good quality seeds are placed inside the soil with the help of tools. The seeds to be used for sowing must be clean, healthy and of better quality. Traditional tool and seed drill is used for sowing. Then coming to 3rd, that is weeding. Weeding is the process in which the undesirable plants, जिनको हम weeds बोलते हैं, are removed from the crop field. It is very important step of agricultural practice as it ensure better plant growth. It is done manually by using khurpi and also with the help of chemical known as weedicides like atrazine, 2,4-D and glyphosate. Then coming to the 4th, that is threshing. It is the process in which husk or chaff is separated from the seed grains. It is done after crop harvesting. For the crops produced on large scale, threshing is done with the help of a machine known as combine. Combine act as both harvester and thresher. Small land holdings have small amount of crops. In this case, winnowing method is used for separation of husk और chaff फ्रॉम सीड ग्रेन्स. ये सारा हमने चैप्टर में डिटेल में स्टडी किया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स. तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स, एक तरफ आपने फर्टिलाइजर लिख लिया, एक तरफ आपने मैन्योर लिख लिया. दीज आर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट. दे आर मेड फ्रॉम केमिकल्स. दीज आर नेचर मेड ऑर्गेनिक मैटर. दे आर मेड फ्रॉम एनिमल डंग एंड प्लांट वेस्ट. These are prepared in factories. These are prepared in open field. These do not add humus to soil. These add humus to soil. 4th difference is these are very rich in nutrients like nitrogen, potassium and phosphorus. These are relatively less rich in nutrients.
They do not increase the fertility of soil. In fact, their continuous use make the soil less fertile. They increase the fertility of soil by making it more porous. They do not increase the water holding capacity of soil. They increase water holding capacity of soil. They do not improve the soil texture. They improve the soil texture. They do not increase the number of soil friendly microbes. They increase the number of soil friendly microbes. Examples are NPK, यूरिया, पोटैश, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट. सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 याद ज़रूर कर लेना. ठीक है, याद होना चाहिए. लिखो अकॉर्डिंग टू मार्क्स. काउ डंग, इसके एग्जाम्पल है मैन्योर के. काउ डंग, पॉल्यूट्री मैन्योर and goat dropping etc. So next question is question number 6. What is irrigation? Describe two methods of irrigation which conserve water. The supply of water to crops at regular interval is called irrigation. It helps in seed germination and supply of mineral and nutrients from soil to the various plant parts. Modern irrigation methods conserve water. The main modern methods are, first one you have studied, sprinkler method. This is very useful for uneven land. In this method, the main pipe is joined to many perpendicular pipes having rotating nozzle at their top at regular interval. ठीक है, when water from source is lifted with the help of pump, it flows with pressure in the main pipe and then to the perpendicular pipes. Finally, the rotating nozzle open and water is sprinkled just like rain on the crops. Or for example, coffee plants and lawns, they are irrigated with this method. Second, drip irrigation. It is a boon for water deficient areas. In this system, water falls as drop by drop directly near the roots. It is commonly used for growing fruit crops like mango, tomato, cucumber, grapes, etc. Question number 7. If wheat is sown in Kharif season, what would happen? Discuss. Wheat is a rabi crop. It needs low temperature and less humid environment to grow. Also, it needs less water. If it is sown in rainy season of Kharif crops, seed will get destroyed due to water lodging. If somehow they grow, yield will be very low. Then coming to question number 8. Explain how soil gets affected by continuous use of crops in a field. Plants take minerals, nutrients and water from soil through their roots. These help the plants to grow better. ठीक है, soil इसमें शो करी हुई है, roots absorb कर रही है mineral and nutrients को, absorption of nutrients from soil. ठीक है, so these are nutrients. You can add one more word, nutrients. Clear? So next diagram है ये absorption of nutrient from soil का. So continuous plantation of crop make the soil deficient in nutrients and finally it becomes infertile. Clear? Question number 9. What are weeds? How can we control them? So weeds are, how can we control them? Weeds are unwanted plants that grow along with the crop plant and fight with them for basic needs like sunlight, water and nutrients. Some weeds are very poisonous. For example weed के ज़रूर देना, bindweed, ragweed. Weed control include removal of weeds is known as weeding. It must be done before their vegetative period starts. We can remove weeds by two methods. By manual method, in this method khurpi is used to uproot the weeds. It must be done at regular intervals. Second आता है by using weedicides. These are the chemicals which kill weeds without affecting the crop plants. Okay, then coming to the next question, that is question number 10, in which आपकी जो नोटबुक आपकी बुक है उसमें दिए होंगे आपको बहुत सारे अनअरेंज, ठीक है, irregular way of the crop practices and you have to write the correct answer in the form of a flow chart. तो मैंने डायरेक्टली ये फ्लो चार्ट ड्रॉ किया जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, देन प्लोइंग द फील्ड, देन सोइंग, देन मैन्योरिंग, देन इरीगेशन, देन हार्वेस्टिंग, देन सेंडिंग द क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री. आप बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं किसमें,
ये तो यहाँ तक सारे स्टूडेंट अच्छे से लिख लेंगे कि पहले प्रिपरेशन करी, फिर प्लो करा फील्ड को, फिर सो करा, मैन्योर और इरिगेशन। तो सोइंग के बाद उसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर डाले जाते हैं, उसके बाद उसकी सिंचाई, इरिगेशन उसके बाद होता है। मैन्योर हमेशा फर्स्ट उससे इरिगेशन से पहले आएगा। क्लियर, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना। लास्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक में एक पज़ल होगा, ठीक है, ड्रॉ किया हुआ, उसमें आपको फिल करने हैं, टर्म्स आपको क्लियर दी हुई है। तो फर्स्ट वन में आ जाएगा इरिगेशन, सेकंड में स्टोरेज, फिफ्थ में क्रॉप, ये डाउन, ठीक है, अप टू डाउन पैटर्न चलेगा ये। क्लियर, और अक्रॉस वाला जो पैटर्न है उसमें आएगा आपका थर्ड नंबर पे, जो थर्ड नंबर है उसमें आएगा हार्वेस्टर, फोर्थ नंबर पे ग्राम, और सिक्स नंबर पे विनोइंग। सो दैट्स ऑल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ 8th क्लास साइंस चैप्टर 1। सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आप बच्चों को आंसर प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है। इनको अच्छे से लर्न कर लेना और नोट डाउन कर लेना। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करके पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।